We're very honored to be here amongst you today. आप सभी के बीच में आने से बहुत सम्मानित हुई हूँ आज. We're very inspired by your enthusiasm and your eagerness to hear about Krishna. आपके उत्साह से और कृष्ण के बारे में सुनने की आतुरता से हम बहुत ही प्रेरित हुए हैं. It's very enlivening to see so many attentive individuals. ध्यानपूर्वक सुनने वाले इतने सारे भक्तों को देखकर बहुत ही प्रेरणा मिलती है. And especially invigorating because you're attentive for the right thing for Krishna. और खास करके ये प्रेरणादायक क्योंकि आप सही चीज के लिए प्रेरित हैं. So thank you for your warm welcome. It's very deeply appreciated, and we are just enlivened by being amongst you. तो आपने बहुत ही अच्छा स्वागत किया, उसके लिए हम बहुत ऋणी हैं और हमें बहुत ही प्रेरणा मिली इससे. So we understand today that the topic is the nectar of Krishna Katha. The nectar. आज का विषय कृष्ण कथा अमृत. So we have chosen one verse from Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 18, Text 9. तो भागवतम 5:18-9 का एक हमने श्लोक सुना है. स्कंद 5 अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 9. So I will read the shlok and just a little bit of the purport, because the purport is a little lengthy, and then we can discuss. And please, if you think of questions, we'll have time for some discussion. Sometimes the discussion is very valuable. तो श्लोक पढ़ेंगे और अनुवाद पढ़ेंगे, उसका तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि तात्पर्य बहुत लंबा है. बाद में प्रश्नोत्तर भी हो सकते हैं क्योंकि कभी-कभी प्रश्न उत्तर करने से बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलता है. So here. Yes, correct. I'm just reading the translation because there's no opportunity to say the Sanskrit. केवल पढ़ेंगे. May there be good fortune throughout the universe. तो पूरे ब्रह्मांड में सद्भाग्य का उदय हो. And may all envious persons be pacified. और सारे ईर्ष्यालु लोग शांत हो. May all living entities become calm. सारे जीवात्मा शांत हो. By practicing bhakti yoga. भक्ति योग का पालन करके. For by accepting devotional service, क्योंकि भक्तिमय सेवा का स्वीकार करके, they will think of each other's welfare. एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोचेंगे. Therefore, let us all engage in the service of the supreme transcendence. इसीलिए हम परम दिव्यत्व की सेवा में सभी लग जाएं. Lord Shri Krishna. जो भगवान श्री कृष्ण है. And always remain absorbed in thought of him. और उनके विचारों में सदैव हम मग्न रहें. So just a little bit from Srila Prabhupada's purport. तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ेंगे. Materialists always think of sense gratification. भौतिकवादी हमेशा इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते हैं. But Prahlad Maharaj has spoken this verse. But Prahlad Maharaj prays that the Lord's mercy will change their minds. प्रहलाद महाराज सोचते हैं कि भगवान की कृपा उनके मन को बदल देगी. And they will stop thinking of sense gratification. और वे इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचना बंद कर देंगे. If they think of Krishna always, everything will be all right. अगर वे हमेशा कृष्ण का स्मरण करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. Some people argue that if everyone thought of Krishna in that way, the whole universe would be vacated. कुछ लोग सोचते हैं कि अगर सब लोग कृष्ण का स्मरण करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड खाली हो जाएगा. Because everyone would go back home, back to Godhead. क्योंकि सब लोग भगवत धाम चले जाएंगे. However, Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur says that this is impossible. लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यह असंभव है. Because the living entities are innumerable. क्योंकि जीवात्मा असंख्य है. If one set of living entities is actually delivered by Krishna Consciousness movement, तो कुछ जीवात्मा अगर कृष्ण भावना आंदोलन से अगर उनका उद्धार हो भी जाएगा, another set will fill the entire universe. तो भी दूसरे जीवात्मा आएंगे और पूरे ब्रह्मांड को फिर से भर देंगे. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namale. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesa Sunyavadi Paskyata Deshitaya
So I'll read the verse once more. It's a beautiful verse. तो सुंदर श्लोक फिर से पढ़ेंगे। May there be good fortune throughout the universe. पूरे ब्रह्मांड में सद्भाग्य फैले। And may all envious persons be pacified. सारे ईर्ष्यालु लोगों को शांति प्राप्त हो। May all living entities become calm by practicing bhakti yoga. सारे जीवात्मा भक्ति योग का पालन करके शांत हो जाए। For by accepting devotional service, they will think of each other's welfare. क्योंकि भक्ति योग का स्वीकार करके वे एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोचेंगे। Therefore, let us all engage in the service of the Supreme Transcendence, Lord Shri Krishna. तो चलो हम सभी परम दिव्यत्व भगवान कृष्ण की सेवा में लगे। And always remain absorbed in thought of Him. और हमेशा उनके विचारों में ही मग्न रहे। So we know that the Vedic scriptures that have been gifted to us by Srila Vedavyas, they're vast. तो हमें पता है कि वेदव्यास ने जो वैदिक शास्त्र दिए हैं बहुत ही विशाल है। We have the 4 initial Vedas, the Rig Veda, the Atharva Veda, the Ajur Veda, the Sama Veda. तो ऋग, साम, अथर्व ऐसे 4 वेद हैं, हमें पता है। And those were expanded upon. There's the Mahabharata, so many thousands and thousands of verses. उस पर विस्तार किया हुआ महाभारत है जिसमें हजारों हजारों श्लोक हैं। There's also the Ramayana is there, the Upanishads. रामायण भी है, उपनिषद भी है, the Puranas. पुराण है। So it's a vast literature, and you could say that the essence of that entire literature is Bhagavad Gita. तो विशाल साहित्य है और उन सभी साहित्य का सार है भगवद गीता। So Bhagavad Gita, the learned transcendentalists have said that Bhagavad Gita comes to us in 3 parts. There's the beginning, the first 6 chapters, the middle 6 chapters, and the final 6 chapters. विद्वान दिव्यवादी लोग बताते हैं कि भगवद गीता 3 भागों में आती है, 6 पहले 6 अध्याय का पहला, दूसरे 6 अध्याय का दूसरा, तीसरे 6 अध्याय का तीसरा भाग। And these great devotional saints, they have said the essence of Bhagavad Gita is those middle 6 chapters where Bhakti Yoga is expressed. महान अध्यात्मवादी कहते हैं कि जो भगवद गीता का सार है वो बीच के 6 अध्याय है, बीच के। And of those 6 chapters which are in the middle of Bhagavad Gita, there is also an essence to those. That's chapter 9, which is entitled The Most Confidential Knowledge. और बीच के जो 6 अध्याय है उनका भी सार है और वो है 9वां अध्याय जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। And chapter 9 also has its own essence, and that is considered the last verse, text 34. और अध्याय 9 जो है उसका भी सार है 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक। Text 34 of the Bhagavad Gita, chapter 9, begins Manmano Bhavamad Bhakto. भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 34, वह श्लोक है मनमना भव मद भक्तो। So Krishna's instruction is always think of me. कृष्ण का उपदेश है हमेशा मेरा स्मरण करो। We are spirit souls, we are eternal, we're full of joy, but unfortunately we're trapped in these material bodies and we've forgotten who we are. हम आत्मा है, आनंद से भरे हैं, नित्य है, लेकिन भौतिक शरीर में फंसे हैं और हम भूल गए कि हम कौन हैं। And by Krishna's simple instruction, always think of Him, we can begin to remember who we actually are. और कृष्ण का जो सरल उपदेश है हमेशा मेरा स्मरण करो, उसके द्वारा हम हमेशा याद रख सकते हैं कि हम कौन हैं। And when one thinks of Krishna sincerely, naturally one wants to become Krishna's devotee. जब कोई प्रामाणिकता से कृष्ण का स्मरण करता है तो अपने आप वो कृष्ण का भक्त बनना चाहेगा। And when one thinks of Krishna and becomes his devotee, naturally one wants to worship him. जब कोई कृष्ण का स्मरण करता है और उनकी पूजा करता है तो अपने आप वो उनका जब भक्ति करेगा स्मरण भी करेगा, पूजा भी करेगा। And by these processes, one gradually comes to understand that Krishna loves me. तो इससे हमें समझ में आएगा कि कृष्ण भी मुझसे प्रेम करते हैं। And understanding that Krishna loves me, our love for Krishna manifests, it blossoms. जब हमें पता लगता है कि कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं तो हमारा भी प्रेम कृष्ण के प्रति बढ़ जाता है, खिल जाता है। And then very naturally we want to surrender to Krishna. फिर नैसर्गिक रूप से अपने आप हम कृष्ण की शरण में जाना चाहते हैं। So by this process, this gradual process of developing our own Krishna consciousness,
we come to understand the beautiful statements that Prahlad Maharaj makes in this verse. तो धीरे धीरे होने वाली ऐसी प्रगति से हमें फिर पता लगने लगता है कि प्रहलाद महाराज ने जो वाक्य कहे उनका अर्थ क्या है. So this is actually the nectar of Krishna consciousness, that we develop our relationship with Krishna. तो यह वास्तव में कृष्ण भावना का अमृत है कि हम कृष्ण के साथ अपना संबंध का विकास करें. And one can say from the first statement here, may there be good fortune throughout the universe, and may all envious persons be pacified. ये हमें दिखता है पहले ही वाक्य से कि पूरे ब्रह्मांड में सद्भाग्य फैले और सारे ईर्ष्यालु लोग शांत हो. इससे पता चलता है that actually by practicing bhakti yoga this is possible, personally and communally and nationally and internationally. कि भक्ति योग का पालन करके यह संभव है, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से, अंतरराष्ट्रीय रूप से. It's a matter of developing our relationship with Krishna, which begins with manmana, remembering him. यह कृष्ण के साथ संबंध विकास करने का प्रश्न है जो शुरू होता है मनमना से. मनमना भव मद भक्तो. And then, as Prahlad Maharaj says here, by accepting devotional service, we will think of each other's welfare. प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भक्तिमय सेवा का स्वीकार करके हम एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोचेंगे. Once I understand that I am spirit soul, part and parcel of Krishna, I can begin to understand that all other living entities, whatever the body, are also part and parcel of Krishna. जब मुझे समझ में आएगा कि मैं कृष्ण का अंश हूं, तो अपने आप मुझे यह भी पता चल जाएगा कि दूसरे लोग भी कृष्ण का अंश है, और चाहे उनका शरीर कुछ भी हो. And then I will want their welfare. I want to see that they can become closer to Krishna. फिर मुझे भी इच्छा होगी कि उनका भी कल्याण हो. मैं भी ये देखूंगा कि वे भी कृष्ण के पास जाए. Therefore, Prahlad Maharaj prays, let us all engage in the service of the Supreme Transcendence, Lord Shri Krishna. इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हम सभी परम दिव्यत्व भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें. And always remain absorbed in thought of him. और हमेशा उनके स्मरण में विचार में मग्न रहे. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Vitale Srimati Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachani Nirvishesha Sindhari Paschati Vishakana Panchakapatarubhyascha Krishna Vaidachati Patanan Bhavani Krishna Vidya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shivasari Gaura Bhakti Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. When we hear this verse spoken by Prahlad Maharaj, we can really feel his love and his compassion sort of seeping out into our hearts from this verse. जब यह श्लोक सुनते हैं हम, तो हमें प्रहलाद महाराज का प्रेम और करुणा महसूस होता है जो इस श्लोक से झलक रहा है. So Vishaka Devi was just speaking about Krishna's love for us, but we can also see that the great pure devotees like Prahlad Maharaj, their love for us and compassion for us also. तो विशाखा माता जी ने बताया कृष्ण का जो प्रेम है हमारे लिए उसके बारे में, लेकिन हम ये भी देख सकते हैं प्रहलाद महाराज जैसे जो शुद्ध भक्त हैं उनका भी कैसा प्रेम है हमारे में. So the Srimad Bhagavatam is considered, in the beginning of the 10th canto of Srimad Bhagavatam, there's an important verse that says that this Krishna Katha is the medicine. भागवतम में एक श्लोक है शुरुआत में ये कि यह कृष्ण कथा जो है यह एक दवा औषधि. So this Bhavaushadhi, this medicine is supposed to change our hearts to relish Krishna's love for us and compassion for all living beings. औषधि लेने से क्या होता है? हृदय का परिवर्तन होता है. हम कृष्ण का प्रेम समझने लगते हैं, कृष्ण कितना प्रेम करते हैं हमसे, और जीवात्मा भी. We can take it as ordinary, and it may remain covered and ordinary for us, but the fact is, it is the healing balm for our hearts. तो इसको हम सामान्य बात समझ सकते हैं और ये ढका हुआ रह सकता है हमेशा के लिए
बहुत देर तक, लेकिन वास्तव में सामान्य बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ी औषधि है हमारे लिए। I remember when Gauravani was small and we would be traveling in India by train. जब गौरवाणी छोटा था और हम भारत में ट्रेन से यात्रा करते थे, he would have his Amar Chitra Katha comic books of Ram Leela and Krishna Leela. तो अमर चित्र कथा लेके वो जाता था जिसमें राम लीला कृष्ण लीला वगैरह होती थी, अमर चित्र कथा। And we would meet some modern Indian family on the train, and their kids would have Mickey Mouse, Donald Duck. और दूसरे सामने वाले लोग होते, उनके बच्चे क्या देखते थे? मिकी माउस, डोनाल्ड डक वगैरह वगैरह। Yeah, so sometimes we see that the Western people are millions of miles away from Krishna, but sometimes they're turning toward Krishna. तो कभी-कभी देखते कि विदेशी लोग करोड़ों मील दूर है कृष्ण से, लेकिन कभी-कभी देखते कि बहुत नजदीक आए कृष्ण से। By the grace of a great pure devotee, Srila Prabhupada. महान शुद्ध भक्त प्रभुपाद की कृपा से। And sometimes we see that the people in India who are so close to Krishna, sometimes they're turning the other way. और कभी दिखता है कि भारत के लोग जो इतने नजदीक है कृष्ण के, कितने दूर गए कृष्ण से। But now it's so inspiring for us to come here and see all of you so keen to hear, as Vishaka Devi was saying, so keen to hear Krishna Katha. लेकिन आज हमने देखा कि बहुत सारे लोग, आप भारतीय लोग यहाँ पर आए और सुनने के लिए आतुर है, जैसा विशाखा माता जी ने बताया, तो देखकर प्रसन्नता होती है। But we have to look inside ourselves to see how is that medicine working. लेकिन अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि ये दवा कैसे काम कर रही है। Just like if you have an illness and you go to the doctor prescribes something. जैसे बीमारी होगी, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कुछ बताता है। But then after a few weeks you have to go back to see is it working. लेकिन 2 हफ्ते के बाद फिर से जाना पड़ता है देखने के लिए कैसे काम कर रहा है। So when we hear this verse from Prahlad Maharaj, we should also look inside ourselves to see how much am I caring for other living beings. तो मैं दूसरे जीवात्माओं की कितनी परवाह कर रहा हूँ, ये भी हमें देखना चाहिए जब हम ये श्लोक पढ़ते हैं प्रहलाद महाराज का। How much am I feeling Krishna's love and offering my love to Krishna? कृष्ण का प्रेम कितना महसूस हो रहा है मुझे और मैं कितना प्रेम दे रहा हूँ कृष्ण को। So we should be taking a pulse to see whether the medicine is actually changing our hearts. परीक्षा करके देखनी चाहिए कि ये दवा मेरे हृदय को परिवर्तित कर रही है कि नहीं। Or is it just remaining on the surface that we don't really take it deeply into our hearts? कि क्या केवल ऊपर रह रही है और अंदर नहीं जा रही है। I want to tell you a very important story I recently heard about Srila Prabhupada. प्रभुपाद के बारे में एक सुंदर कहानी बताती हूँ आपको। Srila Prabhupada in 1972 was speaking in the courtyard of the Radha Damodar temple on Nectar of Devotion. राधा दामोदर मंदिर में 1972 में प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में प्रवचन दे रहे थे। And Vishaka Devi and her husband Yadubar were actually there in the courtyard. और विशाखा माता जी और यदुबर प्रभु उनके पति वो भी वहाँ पर थे। So Prabhupada was speaking on this topic actually. He was speaking on how this Vasudev Katha Ruchi, how this is when we develop a taste for this Vasudev Katha, this is the beginning of our perfection. तो प्रभुपाद बता रहे थे कि वासुदेव कथा रुचि की, वासुदेव की कथा के बारे में जो रुचि है उससे कैसे हृदय परिवर्तित होता है। And if we see that we're not getting a taste for this Vasudev, if we're not getting that ruchi, there's something wrong. We're doing something wrong. अगर ये रुचि हमें नहीं मिल रही है तो कुछ ना कुछ गलती कहीं ना कहीं हो रही है, ये भी हमें समझना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद बता रहे थे। So in this lecture, Srila Prabhupada was speaking very, very strongly. And he was saying that this is the problem in our society, that the preachers are not getting the taste for Katha, Vasudeva Katha. तो उस प्रवचन में प्रभुपाद बहुत ही कड़े शब्दों का उपयोग कर रहे थे, बोल रहे थे कि आजकल यही समस्या है कि प्रचारक लोगों को ये रुचि नहीं मिल रही है। So if you are a preacher and any devotee who takes to Krishna consciousness really wants to share it, so really we should all be trying to be preaching Krishna consciousness. अगर आप प्रचारक है और जो भी भक्त को कृष्ण का रुचि मिला है तो दूसरों को देना चाहेगा, तो इसीलिए हम सभी को प्रचारक बनना चाहिए। We heard today that you all want to hear about book distribution. आज हमने सुना कि आपको ग्रंथ वितरण के बारे में सुनने की इच्छा है। So if we want to give Krishna consciousness, we have to first of all think very deeply about receiving it in our own hearts. अगर कृष्ण भावना देना चाहते हैं तो पहले
आपको लेना पड़ेगा, फिर दूसरों को दे सकते हैं। So Prabhupada was making this point that this is the problem. The preachers are not getting a taste for Vasudeva Katha. तो प्रभुपाद यही बता रहे थे कि यही समस्या है कि प्रचारक लोगों को ये वासुदेव कथा रुचि नहीं मिल रही है। And he said, and because of this, they're not able to give the taste to the people in general. इसीलिए वे कहते थे कि इसीलिए दूसरों को भी वो कृष्ण भावना का रुचि नहीं दे पा रहे हैं। He said, it's not the fault of the people, it's the fault of the so-called, he said, so-called preachers. उन्होंने कहा ये लोगों का दोष नहीं है, ये उन तथाकथित प्रचारकों का दोष है कि जिनके पास वो रुचि नहीं है। So if we don't get a taste for Vasudeva Katha, he said, we are just really trying to imitate Krishna. तो अगर हमें वासुदेव की कथा का रुचि नहीं मिल रही है, तो वास्तव में हम कृष्ण की नकल करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा प्रभुपाद बता रहे थे। Imagine how heavy this is. Prabhupada saying, if you don't get a taste for Krishna and you speak Krishna Katha, you're just trying to imitate Krishna. You're trying to take the place of Krishna. तो कल्पना कीजिए कितना बड़ा भारी वाक्य बोला प्रभुपाद ने कि अगर आपको कृष्ण की रुचि नहीं मिल रही है कृष्ण कथा की और दूसरों को बताने का देने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब आप कृष्ण की नकल कर रहे हैं। Imagine it's like a type of idol worship. जैसे कोई पुतले की पूजा करता है वैसा। Like I'm setting myself up as an idol and people should look at me and hear from me. जैसे मैं ही बैठ जाऊंगा सजकर धजकर और अपेक्षा करूं कि लोग मेरी पूजा करें, इस प्रकार की बात हुई। Very heavy instruction. कितना बड़ा भारी शब्द है प्रभुपाद का। It reminds me of a funny memory I have when I first became a devotee in Montreal, Canada. जब मैं पहली बार भक्त बनी मॉन्ट्रियल कनाडा में, actually San Francisco before Montreal, but there was one devotee in the Montreal temple. He was French. तो मॉन्ट्रियल मंदिर में एक भक्त था, वो फ्रेंच था। And when we would go on Harinam Sankirtan on the street, जब हम हरिनाम संकीर्तन के लिए रास्ते पर जाते थे, he was a very flamboyant person. तो बहुत ही उछलता था वो हरिनाम संकीर्तन में। And to the people on the street on Harinam Sankirtan, he would say, with his French accent, I'll imitate a French accent. He would say, perhaps you have been to our temple and you have seen me dance. तो जब हरिनाम संकीर्तन में जाता था ये फ्रेंच भक्त, तो बहुत ही नाटक जैसा करता था। आपने देखा होगा कि कैसे आप मंदिर में आए होंगे और आपने देखा होगा कि कैसे मैं नाचता हूँ मंदिर में। So the point of coming to the temple is not to see him dance. तो मंदिर में आने का उद्देश्य उसको नाचते हुए देखना नहीं है। The point of coming to the temple is to see Krishna and fall in love with Krishna. मंदिर में आने का उद्देश्य कृष्ण को देखना और कृष्ण के प्रेम में गिरना, कृष्ण से प्रेम करना। Yeah, so this is a very, very important point. If you're preachers, if you're devotees, actually, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that the best preacher will be the best Bhajananandi. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि सबसे अच्छा प्रचारक वही होगा जो सबसे अच्छा भजनानंदी है। So we think of the Bhajananandi, one who's doing bhajan and one who's doing prachar, as two different people. हम सोचते हैं कि भजनानंदी भजन करने वाला और प्रचार करने वाला ये दोनों अलग अलग हैं। But actually they should be one person. लेकिन वास्तव में वो दोनों एक ही व्यक्ति होना चाहिए। Yeah. And I want to tell one other little story that I think is important before I hand the microphone back to the real speaker. तो एक कहानी बताऊंगी, उसके बाद माइक फिर से माता जी को दे दूंगी। So on this point of Krishna loving us and falling in love with Krishna and giving that love of Krishna to others, here's another very important story. तो कृष्ण के प्रेम में गिरना, कृष्ण का प्रेम महसूस करना, कृष्ण का प्रेम दूसरों को देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इससे ये कहानी से दिखता है। So there was a young devotee. He was at New Vrindavan in the U.S. and he was guarding Srila Prabhupada's house at night. He was the night guard. तो न्यू वृंदावन में अमेरिका में एक नया भक्त था जो प्रभुपाद के घर की रात को देखभाल करता था, रात के समय चौकीदारी करता था। And he was very young and very inexperienced. And नया था, अनुभव नहीं था उसको। But at night, so Prabhupada was upstairs in his room and he was translating. This young man could hear Prabhupada's dictaphone clicking and he could hear Prabhupada's voice translating his books.
तो प्रभुपाद रात को ऊपर अनुवाद करते थे डिक्टाफोन पर, और उसको उसकी आवाज सुनाई देती थी मशीन की, और प्रभुपाद की भी आवाज सुनाई देती थी कि प्रभुपाद कैसे बोल रहे हैं। So first he thought, oh, Prabhupada's reading his own book. तो उसने सोचा पहले कि शायद प्रभुपाद अपना खुद का किताब खुद पढ़ रहे हैं। But then he realized Prabhupada was translating the book. लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, प्रभुपाद अनुवाद कर रहे हैं। So then it started to rain, and he came into the attached garage and was doing his gardening work from inside. तो बारिश होने लगी, वो अंदर की तरफ आ गया गैरेज में। And then all of a sudden he felt a presence behind him in the garage. तो अचानक उसको महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। And he turned around, and it was Srila Prabhupada himself standing right behind him. उसने मुड़ के देखा और पाया कि प्रभुपाद ही उसके सामने खड़े हैं। Thank you for your enthusiasm and love for Srila Prabhupada. आपके उत्साह के लिए धन्यवाद, प्रभुपाद के प्रेम के लिए भी। So just imagine, he was the chowkidar. कल्पना कीजिए वो एक चौकीदार है, Not a very high position. बहुत बड़ा स्थिति में पद में नहीं है। So when he saw Srila Prabhupada, he offered his obeisances, and he said, and then he got up and he said, Srila Prabhupada, is there any service I can do for you? प्रभुपाद को देखा, प्रणाम किया और बोला, प्रभुपाद मैं कोई सेवा कर सकता हूँ आपकी? So Srila Prabhupada said, yes, you go where I will not go. हाँ, तुम एक सेवा कर सकते हो, तुम वहां पर जाओ जहां मैं नहीं जा सकता हूँ। And he was bewildered because Prabhupada had just come from Tokyo, Japan, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Texas, Chicago, and he was on his way to New York, London, Germany, Paris. तो वो भ्रमित हो गया सुन के कि प्रभुपाद जापान, टोक्यो वगैरह से सब जगह पे जाके आए हैं और अभी न्यूयॉर्क भी जाने वाले हैं, तो कहाँ पर वो नहीं जा सकते। So he said, but Srila Prabhupada, where is it that you won't go? उसने पूछा, प्रभुपाद वो जगह कौन सी है कि जहाँ पर आप नहीं जाएंगे? And Prabhupada said, and this is very important, please remember this story. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ने कहा, याद रखिए, It's not really just a story, it's an important instruction. ये कोई केवल कोई कहानी नहीं है, ये महत्वपूर्ण उपदेश है। Sometimes one of these stories can change the whole course of your life. कभी-कभी एक कहानी आपका पूरा जीवन बदल सकती है। So he said, where is it that you won't go, Srila Prabhupada? उसने पूछा, प्रभुपाद वो जगह कौन सी है कि जहाँ पर आप नहीं जाएंगे? So Prabhupada said, to the future. उन्होंने कहा, भविष्य में। And then he said, and this is very key, he said, and by the way you treat the people there, they will know how much Krishna loves them. जिस तरह से तुम लोगों के साथ बर्ताव करोगे, तुम लोगों के साथ बर्ताव करोगे, उसी प्रकार से वो जानेंगे कि कृष्ण कैसे है, क्या है। So my point is, don't set yourself up. If you're a preacher, don't you set yourself up as a big idol to be worshipped, but rather show people how much Krishna loves them by the way you treat them. तो अगर आप प्रचारक हैं, तो आप ऐसा खड़ा मत रहे कि लोग आपकी आगे पूजा करें, बल्कि ये दिखाइए कि कृष्ण उनसे कितना प्रेम करते हैं। ये बात आप उनको दिखाइए। So perhaps I'll tell just another Prabhupada pastime in relation to these points that we're making. तो इसी संदर्भ में और एक लीला प्रभुपाद की बताएंगे। And then we'll have time for a discussion. फिर चर्चा करेंगे। So please think if there are any points you want to bring up for चर्चा में discussion. अगर आपको कोई बिंदु ऊपर लेके आना है तो उसके बारे में सोच के रखिए। So this story I was personally there for. It happened at the time we had a huge pandal in Delhi. इस कहानी में मैं खुद थी और दिल्ली में एक पंडाल हुआ था, उसकी कहानी है। Prabhupada spoke every evening. There was kirtan also, there was arti, there was prasadam distribution, and not only that, but the devotees had actively gotten very important people from the city of Delhi to come and introduce Prabhupada. तो हर शाम को कीर्तन होता था, प्रसादम होता था, प्रभुपाद का प्रवचन होता था और भक्त लोग बड़े-बड़े लोगों को प्रभुपाद से मिलवाने के लिए लेके आते थे। And the pandal was in a very good location. It was very well attended. There'd be 15,000 to 20,000 people there every evening. पंडाल की जगह बहुत ही अच्छी थी और 15 से 20,000 लोग हर दिन आते थे।
And our god sister Yamuna Devi, she was in charge of the deity worship at the pandal. हमारी गुरु बहन यमुना देवी मूर्ति पूजा की देखरेख करती थी पंडाल में. And she had also arranged for those deities to be carved in Jaipur, to be taken to the pandal. She had arranged for all the shringar, all the mukut, the backdrops, the altar, everything. तो जयपुर में मूर्तियां बनवाई उन्होंने, पंडाल में लाने की व्यवस्था की गई, उनका पूजा और उनका श्रृंगार सब वो देखती थी. And she also oversaw the worship of the deities every day from early morning Mangal Arati to late at night. और मंगल आरती से लेकर रात तक मूर्ति पूजा का निरीक्षण स्वयं करती थी. So at the end of this 10-day festival, Yamuna Devi was exhausted and she became very ill. 10 दिन के उत्सव के बाद यमुना देवी थक गई और बीमार हो गई. And we were staying in an ashram in Delhi. There was one large room for the ladies. हम दिल्ली में आश्रम में रहते थे और स्त्रियों के लिए एक आर्ट रूम था. And to try to recuperate, Yamuna Devi moved into the walk-in closet in this ashram. तो बीमार हो गई थी यमुना देवी, तो ठीक होने के लिए उसी आश्रम में आके रहने लगी. And she would lie on the floor in the closet all day, just resting and trying to recuperate. और दिन भर वो आराम करती थी क्योंकि बीमार थी, ठीक होने के लिए आराम करके पूरा दिन सोते रहती थी. I had given her some black and white portraits of Srila Prabhupada, and she put those all around her, so wherever she looked, she saw Srila Prabhupada's image. तो मैंने उनको प्रभुपाद के कुछ चित्र दिए थे, तो अपने चारों ओर चित्र उसने प्रभुपाद के रखे थे, जहाँ भी वो देखती थी प्रभुपाद के चित्र उसको दिखाई देते थे. So one morning I was there with Yamuna Devi and I was asking her if there was anything I could get for her from the market. तो एक दिन सुबह को मैंने यमुना देवी से पूछा कि बाजार में से कुछ लेके आऊं तुम्हारे लिए. And much to my surprise, rather than answering me, she rolled over and offered her prostrated obeisances. लेकिन मुझे उत्तर देने के बजाय उसने क्या किया, वो उल्टी हो गई और उसने अपना प्रणाम किया मुझे. And I looked up, and there was Srila Prabhupada. He had walked into the woman's ashram, and he was coming right to the closet to see Yamuna Devi. और मैंने ऊपर देखा तो देखा कि प्रभुपाद आए हुए स्वयं यमुना देवी की तबीयत कैसी है देखने के लिए. And when he looked, Hare Krishna, Hare Prabhupada. He looked in the room and saw that she was weak and very unwell, and he said, "We must get you a room with proper ventilation. We must get you proper prasadam." तो उन्होंने देखा कि बहुत दुबली पतली हो गई है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं. उन्होंने कहा कि अच्छे कमरे में तुमको रहना चाहिए जहाँ पे अच्छी हवा हो. So this gives some idea how Prabhupada loved his followers. He loved all living entities, as Prahlad Maharaj was saying in this verse, and he cared deeply. He took the time to make some adjustments so this very dear devotee could make a recovery. तो इससे पता चलता है कि प्रभुपाद अपने अनुयायियों से कितना प्रेम करते हैं, सभी जीवात्माओं से प्रेम करते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं. तो इस प्रसंग से हमें दिखाई देता है. So perhaps all of us can take inspiration that we want to help each other. We want to facilitate each other spiritually and also materially. तो हम इससे प्रेरणा लें कि हम सभी एक दूसरे की कैसे सहायता करें, आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी. Ultimately, we want Krishna's mercy, and Krishna is very merciful to those who facilitate and worship and serve his devotees. अंततः हमें कृष्ण की कृपा चाहिए और कृष्ण उस पर प्रसन्न होते हैं जो दूसरों को सहायता करता है भक्ति में. So let us all take that to heart, that perhaps we can please Krishna and get his mercy by helping each other. तो एक दूसरे को सहायता करके हम इस प्रकार कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं. And perhaps this is the nectar of Krishna Katha. और यही शायद कृष्ण कथा का अमृत है. So Hare Krishna, all glories to Srila Prabhupada. I hope you have some points you would like to bring up for discussion. तो कुछ बिंदु, कुछ बातें आपके मन में होगी तो आप उसको चर्चा के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं. In the back.
Hare Krishna. Asking a question, general question. It's not related with the topic. He's asking. Some people say we should chant Hare Krishna loudly. Some people say we should say softly. We become confused. What is the real situation? From Vrindavan to Bombay, different people say different things. You're talking about kirtan or japa? आप कीर्तन की बात कर रहे हैं कि जप की बात कर रहे हैं? जप माला. So the process of chanting japa is supposed to be a personal practice. जप करने की जो विधि है व्यक्तिगत विधि है. It's supposed to be for we're supposed to be calling out to Krishna to please accept me. हम कृष्ण को पुकारते हैं, कहते मुझे स्वीकार कीजिए. And it's personal and private. ये व्यक्तिगत है और निजी है. I noticed this morning I was chanting japa in the temple and there was one person chanting japa very loudly. मैंने सुबह को देखा, मैं मंदिर में सुबह को जप कर रही थी और देखा कि एक व्यक्ति जोर से जप कर रहा है. It's supposed to be a calling out to Krishna. It's not so much about making loud sounds and. तो ज्यादा ये कृष्ण को पुकारने की बात है, जोर से आवाज करने की बात नहीं है. I remember once when I was a young devotee in Montreal, we had one young devotee who was chanting japa very loudly in the temple. जब मैं मॉन्ट्रियल में नई भक्त थी तो मुझे याद है एक भक्त सुबह को मंदिर में जोर से जप करता था. Actually, that was the young Jayapataka, not Swami yet. वो उस समय के जयपताका, अभी वो स्वामी नहीं बने थे. He was very enthusiastic. बहुत ही उत्साहपूर्ण थे. So he was disturbing the other devotees by chanting so loudly in his japa in the temple. तो मंदिर में जोर जोर से जप करके दूसरे कुछ भक्तों को थोड़ी परेशानी होती थी. So Prabhupada made a good solution. He said, you should go outside and chant your japa. तो प्रभुपाद ने बोला कोई बात नहीं, तुम मंदिर के बाहर जाके जप करो. In this way, you won't disturb the others and everyone is satisfied. इस प्रकार किसी को परेशानी नहीं होगी, तुम भी खुश, बाकी सब भी खुश. Montreal is built on a mountain, so it's Mont-Royal. So it's the Royal Mountain. मॉन्ट्रियल माउंटेन शब्द से है. माउंटेन का अर्थ मालूम है आपको? पर्वत. तो वहाँ पे पर्वत है. So Prabhupada told him, go chant on the mountain. प्रभु जाओ पर्वत पे जाके जप करो. ठीक है, अभी इतना ही उत्तर है. Yes, he's called giving a comment that we should chant sweetly and softly. Hare Krishna. I want to know how Prabhupada think, how he sees life and the people, how he think about people and his life. How does Prabhupada see life and how does he see people? And the people who is not in the Krishna consciousness. How he handles people who are not in Krishna consciousness. So Prabhupada was very intuitive. प्रभुपाद बहुत ही दिव्य दृष्टि वाले थे. You cannot say that he dealt with people who were not devotees in the same way. तो ऐसा नहीं कह सकते कि जो भक्त नहीं थे उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, अलग करेंगे व्यवहार. But each one was very individual. हर व्यक्ति अलग अलग है.
I can give one example उदाहरण दे सकते हैं हम, of myself. मेरा स्वयं का उदाहरण दे सकती हूँ मैं। When I first met Srila Prabhupada, I had zero interest in spiritual life. जब मैं पहली बार प्रभुपाद से मिली तो मुझे आध्यात्मिक जीवन में थोड़ी भी रुचि नहीं थी। I met him here in Bombay in the Akash Ganga building. उस समय हम लोग बम्बई में थे, आकाश गंगा बिल्डिंग में, in his room. उनके कमरे में। And I was with my later to become my husband, John. तो मेरे होने वाले पति के साथ में उस समय थी। And it was just the three of us in Prabhupada's room. और उस समय हम लोग प्रभुपाद के कमरे में हम केवल 3 लोग थे। And we had मेरे होने वाले पति। We had a discussion. It was not at all rushed. It may have been 10-15 minutes. हमने थोड़ा चर्चा किया, ज़्यादा देर तक नहीं, केवल 10-15 मिनट तक। But it was, in retrospect, I could say it was unique. लेकिन जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो पता लगता है कि ये बहुत ही अनोखी चर्चा थी। Because during that entire discussion, Srila Prabhupada did not mention Krishna once. क्योंकि उस पूरी चर्चा में प्रभुपाद ने एक भी बार कृष्ण का नाम नहीं लिया। And after I had been with him for some time, I realized that Prabhupada was always speaking about Krishna. लेकिन जब प्रभुपाद के साथ बहुत समय बिताया तो बाद में पता चला कि प्रभुपाद हमेशा कृष्ण के बारे में ही स्मरण करते हैं। But Prabhupada had the intuition that I was not ready to hear about Krishna. I would not have received those words favorably, so he did not say one single word about Krishna. हमेशा कृष्ण का स्मरण करते हैं, लेकिन उस समय प्रभुपाद को दिव्य दृष्टि से पता चला कि मैं कृष्ण की भक्त नहीं हूँ, तो उन्होंने मेरे सामने एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं लिया। On the other hand, as a photographer, I used to walk regularly on the beach, Juhu Beach, with Srila Prabhupada and some of his followers. तो मैं फोटोग्राफर हूँ, तो प्रभुपाद और उनके अनुयायियों के साथ मैं फोटो खींचने के लिए जो बीच पर चलती थी। And many times we were joined by one personality named Dr. Patel. तो बहुत बार सुबह के चलते समय डॉक्टर पटेल नाम के एक व्यक्ति बहुत बार हमारे इसमें आते थे। Dr. Patel considered himself a Vaishnava. He knew the entire Bhagavad Gita. डॉक्टर पटेल स्वयं को वैष्णव समझते हैं, उनको पूरी भगवद गीता मालूम है। But Prabhupada understood that actually he was a Mayavadi. He felt the Supreme was impersonal. लेकिन प्रभुपाद को ये बात समझ में आई कि डॉक्टर पटेल एक मायावादी है, वो परम सत्य को निर्विशेष समझते हैं। And as we would walk down the beach, they would get, Dr. Patel and Srila Prabhupada would get into fiery arguments. तो जैसे हम जो बीच पर चलते थे, तो डॉक्टर पटेल और प्रभुपाद के बीच में थोड़ा मतभेद, झगड़ा जैसा होता था। And those of us who were on the walk with Srila Prabhupada become very upset with Dr. Patel because he did not have the reverence for Prabhupada that we had, and we felt Prabhupada deserved. तो हम लोग जो दूसरे प्रभुपाद के साथ चलने वाले उनके शिष्य थे, हमको बहुत गुस्सा आता था डॉक्टर पटेल के ऊपर कि क्या प्रभुपाद के सामने ऐसा बात करते हैं और उनका अपमान करते हैं। And Prabhupada would see how upset we were, and he would kind of say, it's okay, we're fighting, don't worry about it. मुड़ के बोलते थे, कोई बात नहीं, आप शांत करो, हमको समझाते थे। One of the persons that were with us was Satsvarup Das Goswami. उसमें एक व्यक्ति हमारे साथ होते थे, सत्स्वरूप दास गोस्वामी। And he would carry his danda, his sannyas danda with him. और वे अपना संन्यास दंडा साथ में लेकर चलते थे। And I noticed that he was so upset with Dr. Patel that he was gripping his sannyas danda so strongly that his knuckles were white. और मुझे याद है उनको डॉक्टर पटेल पर इतना गुस्सा आता था कि जैसे डंडा को ऐसा करते हो जैसे मारने वाले डंडा। So this is another way that Prabhupada would interact with a non-devotee, very much according to that person's mentality. तो इससे हमको समझ में आता है कि प्रभुपाद ऐसे लोगों से कैसे बर्ताव करते हैं कि जो भक्त नहीं है, उसके अपने स्वभाव के अनुसार बर्ताव करेंगे। I wanted to say something. I think it's a very important point because I think many devotees or most devotees don't understand this about Prabhupada.
तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि बहुत सारे भक्त प्रभुपाद की इस बात को नहीं समझते हैं। Sometimes within 5 minutes, 10 minutes, Prabhupada might answer one question differently for one person to another person. कभी-कभी 5-10 मिनट में प्रभुपाद एक ही प्रश्न का उत्तर एक व्यक्ति के लिए अलग देंगे, दूसरे व्यक्ति के लिए अलग देंगे। So it appears as though you can find many contradictory statements by Srila Prabhupada. तो ऐसा आपको दिखेगा कि प्रभुपाद ने एक जगह पर एक लिखा है, दूसरी जगह पर दूसरा लिखा है, तो विरोध दिखता है आपको प्रभुपाद के उपदेश में, कभी-कभी दिख सकता है। He would answer according to the mentality of in which the question was being asked. उस सामने वाले के मनोवृत्ति के अनुसार कि जिस मनोवृत्ति के अनुसार उसने प्रश्न पूछा है, उसके अनुसार वो जवाब देते हैं। Do I have time to give 2 examples? Yes. Okay. So I'll give 2 examples of what I'm talking about. तो मैं क्या बात कर रही हूँ उसके 2 उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। Prabhupada was often asked, "Are you seeing Krishna?" प्रभुपाद को बहुत बार लोग प्रश्न पूछते थे, क्या आप कृष्ण को देखते हैं? And so once he was asked this question in a very challenging way. एक बार उनको किसी ने ऐसे ही चुनौती देकर प्रश्न पूछा, आह्वान चुनौती देकर ऐसा पूछा। If you read Bhagavad Gita, 4th chapter, 34th verse about approaching a guru, the instruction says that there are different ways to inquire. We must inquire. You can inquire to understand or to not understand. तो भगवद गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में हमें पता चलता है कि गुरु के सामने कैसे जाना चाहिए, प्रश्न कैसे पूछना चाहिए। आप एक को समझने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं या मुझे समझना ही नहीं है, ऐसे भाव से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। So this young man asked Prabhupada, "Are you seeing Krishna? Are you seeing God?" तो इस लड़के ने प्रभुपाद को पूछा, क्या आप देखते हैं कृष्ण को, क्या आपने भगवान को देखा है, ऐसा चुनौती दिया। So Prabhupada said, "No, because you are standing in the way." प्रभुपाद ने क्या कहा? नहीं, तुम बीच में खड़े हो, इसलिए नहीं दिखा है, बाजू में हो जाए। And another time, Prabhupada was asked the same question, but in a very sincere and humble way. और दूसरी एक बार प्रभुपाद को वही प्रश्न पूछा गया, लेकिन नम्र तरीके से, प्रामाणिकता से नम्र होकर प्रश्न पूछा गया। Are you seeing God? क्या आपने भगवान को देखा है? इस प्रकार से वैसा भाव, नम्र भाव से प्रश्न पूछा। So in this situation, Prabhupada said, "Yes, and you are also seeing God. Every day you see the sunrise. Every night you see the moon. Haven't you tasted water, the pure taste of water? You are also seeing God." प्रभुपाद ने कहा, हाँ, और आप भी देखते हैं भगवान को, हर दिन देखते, सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, पानी पीते, पानी का स्वाद चखते, हर दिन आप भी कृष्ण का दर्शन करते हैं। I have these flyers here. Maybe we can give them out. So we have copies of Vishaka Devi's wonderful book for sale and flyers that you can take to give to all your friends. तो विशाखा माता जी का अद्भुत पुस्तक, इसकी कापियां है यहाँ पर, आप ले सकते हैं, और पैम्पलेट बांटने के लिए अभी जो पिक्चर आ रहा है हरे कृष्ण का, उसका पैम्पलेट है, बांट सकते हैं। Hare Krishna. Thank you very much for being present today. Actually, I approached Rubidas Prabhu and I asked, we have these super wonderful devotees here from our disciples, and it's our opportunity to have the association. If he would give me one of his class, today, Mataji, my class is cancelled. I'm having a program, but the Pritivardhan program is available, and I'm so happy that so many devotees, by His grace, so many of you have had the opportunity for this wonderful, wonderful association. बहुत ही धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपकी वजह से बहुत ही अद्भुत संगति हमें प्राप्त हुई और अद्भुत ज्ञान मिला। So
it's the book marathon. So Rupi Rashtravi said the theme is book distribution. So we have heard this wonderful instruction about how to give Krishna praying to others, the mood, the attitude, and I hope that will come out from here, ready, charged up, ready to do book distribution. तो ग्रंथ वितरण का महीना है, तो ग्रंथ वितरण करते समय कैसा भाव होना चाहिए, यही हमने सीखा कि कृष्ण का प्रेम हम कैसे दें लोगों को। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके माध्यम से हमें बहुत ही प्रेरणा मिली। हम पूरे चार्ज हो गए थे ग्रंथ वितरण करने के लिए। And right after the book marathon, there's a reward for all of us. The reward is Prabhupada. I have seen this movie. I was in my Guru Maharaj, Pritivardhan Swami, 2-3 weeks ago, and he just took me to see this movie. And so this movie is Prabhupada from day one. You know how this extraordinary movement has been set up. You cannot imagine it. We are now living in this movement, but where it comes from and what is the history of this movement and what is the impact on the world. This is what you will learn from this movie. So this is an advertisement from my part because I've seen it. And I invite everybody, please take a pamphlet and make sure that you and all your friends, whoever hasn't come here, please inform them and attend this movie. तो मैराथन के बाद जो पुरस्कार मिलेगा वो यही है पुरस्कार, ये मूवी है, सिनेमा। और माता जी को उनके गुरु महाराज गिरिराज महाराज लेके गए, उन्होंने माता जी ने, सिद्धिलासा माता जी ने मूवी देखा है और शुरुआत से ही पूरा प्रभुपादमय मूवी है। और हम तो इस आंदोलन में रह रहे, लेकिन आंदोलन कैसे शुरू हुआ और कैसे फैला ये पूरा इस मूवी में बताया गया है। Distribute this pamphlets, and we also got the book 5 years 11 months, a lifetime of unexpected love, Vishaka Dasi. So this book is for 400, and the books are available here on the table. In the room, there's more. Yeah, so we have more, there's a few here, and we have more. So Bhagavad Gita is going to just charge of this 400. तो ये पुस्तक है, आप पढ़ सकते होंगे दूर से। 5 years 11 months यानी 5 महीना, करीब 5 वर्ष 11 महीना, and a lifetime of unexpected love, और अपेक्षा रहित प्रेम का जीवन प्रभुपाद के साथ, विशाखा दास। तो 400 रुपया इसका कीमत है पुस्तक का। तो जिसको भी लेना है तो हम यहाँ पर है, आप 400 रुपया देके पुस्तक लेके जा सकते हैं। Hare Krishna, thank you very much.